In India, we've not made a film which is, say, financial thriller, and that's how I categorize this film. इस story में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं. There are so many elements in this story which are so unique and so great. So I think it's a great story for our youngsters to watch. It is important for people to know how we reached where we have reached. In our first meeting, when I had read the script, the first thing Vipul sir said that we are doing this as a theatrical release. Chinmay Mandlekar is a master of R&D. Immense clarity he has about the subject that he is dealing with. Me and Manoj were discussing कि film किन से direct करवानी चाहिए, और फिर चिन्मय का नाम आया and we agreed कि चिन्मय should be the director. That one sentence that he said कि हम ये film theatrically release कर रहे हैं, that stayed with me throughout the shooting of the film. मजे की बात यह है कि RBI अंदर से दिखता कैसा है, बहुत कम लोगों ने देखा. Ashin tried very hard to get us inside RBI. All the permissions यहाँ वहाँ, he tried very hard. Be it राष्ट्रपति भवन, South Block, North Block, India Gate, ये सब दिखेगा. To make it possible that we go and shoot there, a lot of credit goes to Ashin, to Vipul sir, and the entire production team also. Subject कितना भी मुश्किल हो, उसका नैरेटिव इतना सिंपल होना चाहिए कि फिल्म देखते वक्त आपका दिल जो है वो आपका फिल्म के साथ धड़कता रहना चाहिए. Emotions have to be at the forefront. अगर मुझे फैक्ट्स की जानकारी लेनी तो मैं आर्टिकल पढ़ सकता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री देख सकता हूँ. Why a film? So in film basically we always want कि human emotions come at forefront. He himself is such a good actor. तो उनको करेक्ट पता होता है कि परफॉर्मेंस कैसे निकालना है. छोटे से छोटे मोमेंट में जो सेकेंडरी थर्ड कैरेक्टर उनके रिएक्शंस जो उन्होंने बिल्ड किए हैं, आई थिंक इट्स मेड द फिल्म सो लेयर्ड एंड ब्यूटीफुल. Again, we had a very great casting director in Mukesh Chhabra, and Mukesh came up with names which I had not thought about. All the characters that you see in the film, they represent some part of India, some section of Indian society. So for us, each and every character became important, and if you see the film, we have managed to complete the arcs of all the characters that are there in the film. My big support system is my DOP sir, Vishal Sinha sir. He is like the energy bomb on the set, and the way he carries entire thing, and he's a solution man. अगर कोई भी problem आती है, तो he will be the first one to come up with a solution. Whatever conversations I have had with my production designer, with my director of photography, Vishal Sinha sir, with the costume designers, with VFX producers, it has always been कि हमने बड़ी picture बनाई. आज की जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं वो एक एक चीज नोटिस करते हैं और वो हमारी गलतियों को पकड़ लेते हैं. We had to make everything look real. So even the gold vault set that you see, Rajesh has taken a lot of effort in setting that up. जनरली ऐसे सीनों के लिए बहुत बजट चाहिए होता है और या फिर बहुत सारी क्रिएटिविटी चाहिए होती है. हमारे पास बजट, इतना बड़ा बजट नहीं था, तो हमने क्रिएटिविटी का यूज किया. I remember one vivid day when we had to shoot right in front of the CST station early in the morning, and as we all know, it is the busiest part of the city. तो वहाँ पे पूरा ट्रैफिक रोक के क्लियर करके वो 9 गाड़ियों का पासिंग लेना, that shot was not easy. Again, a lot of credit goes to the production team. So that day everybody was focused कि भाई point A से point B अपनी 9 गाड़ियाँ पास हो जाए, अपने को शॉट मिल जाए. ये फिल्म बनते बनते करीब 5 साल हो गए. बहुत सारा वक्त इसमें से राइटिंग और रिसर्च पे गया, और वो मुझे लगता है कि इस फिल्म का बैकबोन था, क्योंकि जब तक रिसर्च सही नहीं हो, आपके फैक्ट सही ना हो, आपकी डिटेलिंग सही नहीं हो, तब तक ये फिल्म
इंटरेस्टिंग नहीं बन सकती थी.